Hello aspirants, I am Dr. Nitin Kumar Puthadia and I welcome you to Dr. Nits Edu Verse. If you are preparing for UGC NET JRF June 26 in English, then this video can significantly improve your preparation strategy. In this video, I am going to share a 30-day detailed minute-wise study plan, especially designed for the phase of preparation, final phase of preparation. Whether your target is NET, JRF, SET, or any PhD entrance, this plan will help you revise effectively and maximize your score. Before we begin, if you are new to the channel, please subscribe, like, comment, and share this video with fellow aspirants. Your support helps us reach more students and continue creating quality academic content. So friends, in this video, our focus would be on both the papers, paper 1 and paper 2. And in paper 2, we shall discuss about English. This whole lecture is designed for intensive final 30-day revision. And it is suitable for aspirants preparing for 10 or 10 to 12 hours daily. So friends, if you have to prepare for, then I assure you, if you prepare in this manner, the success will be at your doorstep. In this video, uh, we shall try to understand uh, whole structure of how to prepare timetable, and in the timetable also which things should be studied at what time. So this is not just a timetable, it is a complete revision roadmap designed to help you cover both paper 1 and 2 English in a systematic and exam oriented manner. So watch this video till the end and take notes and start implementing the plan from today itself. So friends, we shall discuss about daily time structure which we are to follow every day. After that, we shall talk about what should be done in week 1, means from day 1 to day 7. Then we shall understand in week 2 from day 8 to 14 which aspects of literature, which aspects of paper 1 we should try to study or revise. Then in week 3 from day 15 to day 21 we shall try to understand the timetable of that. And then comes the day 4, week 4, day 22 to 26. And in final revision phase from day 27 to 30. In these 4 days, what should we do? That will also be discussed here. After that, we shall also focus on daily micro targets. Then full mock test strategy क्या रहनी चाहिए हमारी. After that, what should we do in last 7 days? So उसके लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए, उसकी हम बात करेंगे. उसके बाद जब एग्जाम का डे आएगा, so what should be our strategy on the day of exam itself? And after that, we shall have final motivational reminder and success formula at last. So friends, you make sure that you stay till the end, because I will also share the success formula and last 7-day strategy that can make a real difference in your NET JRF score. So let us start with daily time structure. What should be our 1 day
timetable. From getting up from the bed till going to the bed, how should we utilize our each minute for our preparation in a very strategic manner and in a very smart manner, so that we can get more of the results from them. So friends, our day should start with early in the morning at 5 o'clock. So at 5 a.m. till 5:45 a.m. you are to wake up, you are to do your daily routine, then you hydrate yourself, get motivation, and in this 45 minutes your focus should be on mental preparation, that in this day, in this whole day, my plan is this, and I am to execute this plan as much as possible. Then from 5:45 to 6:15, in this half hour, you are to do the revision of previous day notes first. Whatever you have learned previous days, you are to just go through those notes and do the active recalling of the steps you have studied. So what happens? It will be the building block for your next preparation. Then your actual session starts at 6:15 to 8:15. So the first session will be of 2 hours. And in this session, our focus should be on paper 2 first, core literature. Then from 8:15 to 9, we shall have 45 minutes break. In that, you can have your breakfast, you can have a little bit rest, you can have refreshment. लेकिन फिर से 9 बजे से 11 बजे, from 9 to 11, our session 2 starts. और उस सेशन में हमारा फोकस लिटरेचर से हम लिटरेरी थ्योरी या क्रिटिसिज्म के ऊपर जाएगी. After that, from 11 to 11:20, you will have again 20 minutes short break. You have a relaxation. You can do whatever you want to do in those 20 minutes. But exactly after 20 minutes, starting from 11:20 till 1 o'clock, your third session starts. And in that session, you are to focus on topics of paper 1. Now from 1 to 2, you will have 1 hour break. In that you have your lunch, you can take a rest, and you can recover your energy. After 2 to 4, again for 2 hours, fourth session will start, in which your focus would be on chronology, writers, and PYQs. And from 4 to 4:30 p.m., again take tea break of half an hour. Be light, be relaxed, and enjoy your tea. After 4:30 till 6 p.m., your fifth session will start, in which you will do practice for MCQs of whatever you have studied in the day for 1.5 hours. And from 6 to 7, you go for a walk, you do exercise, either you prepare dinner, and it means that in this hour, you take physical refreshment. And from 7 to 8:30, again, for 1.5 hours, your sixth session will begin, in which your focus will be on mock test or PYQs. And from 8:30 to 9 p.m.,
You will have your dinner. So have hearty dinner, get refreshment, and again from 9 to 10 or 10:30, you can have quick revision of whatever you have done throughout the day. You can go through the flashcards if you have prepared, or you can go through your notes which you have prepared throughout the days. And from either 10 p.m. or 10:30 p.m., you go to sleep and take proper rest, because your proper sleep will help you to learn better uh, from the next day. So you can understand from this structure, friends, that this one day planning जो है ये ऐसा बनाया गया है जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेक भी मिलता जाए और एक प्रॉपर वे में आप आगे बढ़ते जाओ. सो फ्रेंड्स, पहला तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए कि ये डे का प्लानिंग आपका इस प्रकार का होना चाहिए. आई होप आप सब समझ गए होंगे कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 और 10:30 बजे तक हमारे कौन सी आवर हमें कहाँ इन्वेस्ट करनी है, जो आगे जाके हमें इंटरेस्ट देगी और हमें अच्छा रिजल्ट भी देगी. तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब एक एक वीक में, क्योंकि ये हमारा पूरे 30 दिन का प्लानिंग है और 30 दिन में हमें मैक्सिमम रिजल्ट कैसे हासिल करना है वो हमें देखना है. सो फ्रॉम वीक 1, in this week, day 1 to 7, our focus would be on British literature foundation. Along with that, our focus would be on basics of paper 1. So friends, ये एक टेबल आप देख रहे हो. ये पूरे टेबल में मैंने पहले दिन हमें क्या करना है, और ये जो पहले दिन में आप देख रहे हो ऊपर जो टाइम दिया है, वो इसके आगे हमने जैसे देखा कि पूरा वन डे का जो स्ट्रक्चर हमने समझा ना, उस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको ये डे 1 से लेकर डे 7 तक जाना है. कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, चलो देखते हैं. डे 1 में in your first session, your focus would be on English literature, all English literature. In that also, from 6:15 a.m. to 8:15 a.m. For 2 hours, your focus would be on Caedmon, BD, Beowulf. So we are to understand that era, important writers of that era, and important works of that era. फिर आपका दूसरा सेशन स्टार्ट होगा 9 बजे से 11 बजे तक का. तो डे 1 में 9 बजे से 11 बजे तक आप क्या करोगे, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर फोकस होगा हमारा. इन दैट ऑल्सो योर फोकस शुड बी ऑन प्लेटो एंड एरिस्टोटल. what Plato had said about the poetry, what Aristotle had said about poetry and tragedy in particular, रिपब्लिक बुक क्या है, ये सारी बात जो है हमें वो देख लेना. आफ्टर दैट इन योर थर्ड सेशन, your focus would be on paper 1, and in that also your micro topic would be teaching aptitude. So you are to focus only on teaching aptitude, nothing else. फिर दोपहर को after 2 to 4 p.m. we are to study literary terms. Along with that, also focus on chronology of important writers. So देखो ये कैसा holistic मैंने बनाया है friends, for you only, because many aspirants have asked me that sir, how should we prepare, हमारा planning कैसा होना चाहिए, what should we study first and what should we study last. So I assure you, from here to till the last moment, if you have gone through the whole video, you will get your success. I can assure you that, friends, because I have tried to include such topics in holistic manner. So friends, हम बात कर रहे थे 2 बजे से 4 बजे आपका फोकस होना चाहिए लिटरेरी टर्म्स, क्रोनोलॉजी,
के ऊपर. From 4:30 to 6 p.m. our focus should be on 100 MCQs. 100 MCQs किससे करेंगे हम? जो ओल्ड लिटरेचर का आपने पढ़ा, literary criticisms of Plato and Aristotle, and teaching aptitude and literary terms and chronology. So you are to focus that at least 100 MCQs I want to read. You can also read along with your preparation, but here this 1.5 hour must be for 100 MCQs at least. Then in your next session from 7 to 8:30 p.m. you are to practice PYQs, friends. So you have to go through the old papers, and whatever the topics you have studied, try to go through the PYQs related to those topics. And at 9 to 10 p.m. Whatever the notes you have prepared, just go through, revise those notes again. And for one day, you have to do only this thing. Not to bother about any other thing. Then comes your day 2. In day 2, our focus will be on Chaucer and medieval literature from 615 to 1815. It means that in our session 1. In our session 2, our focus should be on Longinus and Philip Sidney. And in our session 3, our focus should be on research aptitude. So you can see from this timetable, friend, that everything goes parallel. Paper 1 is there, literature is also there, and theory and criticism is also there. Then, friends, in your fourth session, in day 2, our focus should be on studying important dates of works of writers. Just study important dates, nothing else. And then, in your next session, your focus should be on cracking 100 MCQs. Then, in the next session, from 7 to 8:30 p.m., give mini mock test. Not big mock test, but give mini mock test of 50 questions, of 60 questions. And then at 9 to 10 p.m., just go through your notes, your flashcards, or whatever the IMP things you have jotted down on your papers. Just go through them and recall. From day in day 3, in literature, our focus should be on Renaissance. From in next session from 9 to 11, we are to study Dryden and Neoclassicism. In your third session from 11:20 to 1 p.m., you are to focus on the topic of communication of paper 1. And from 2 to 4, we are to study writers and their works in chronological order. Then at 4:30 to 6 p.m., go through the PYQs. And 7 to 8:30 p.m., give little big test, big mock test. So on day 2, we had a mini mock test. But now we are improving day by day. So here we have put giving mock test of 60 to 70 or 100 questions. And then from 9 to 10, you are to do revision. In that revision, you are also to focus on whatever the mistakes you have done in your mock test or PYQs. So you are to correct them and try to improve yourself. On day 4, our focus will be on Elizabethan drama. In session 2, we shall study Dr. Johnson. And in paper 1 section, means section 3,
our focus would be on logical reasoning. Then from 2 to 4, we will try to focus on terms related to drama only. Then in the next session, do MCQ drill. Up till now, friends, here you used to do only PYQs or 100 MCQ. Now you are also trying to do it in a form of drill. Means you go to the answer last, first you assume the answer, and then from 7 to 8:30 p.m. in the next session, our focus should be on PYQ analysis, that which kind of questions have been asked from this area. And then 9 to 10 p.m. again we are to focus on our quick notes. On day 5, our first session will begin by studying Shakespeare's tragedies. And then in the next session, our focus would be on romantic criticism. And in the third session, we shall focus on data interpretation of paper 1. And उसके बाद के सेशन में 2 से 4 बजे हम शेक्सपियर की जो कोटेशंस है, क्योंकि हमने देखो सुबह जो है वो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज पढ़ी है, तो साथ में कई कोटेशंस भी हमारे ध्यान में आए होंगे। यहाँ हमें वो कोटेशंस और दूसरे कोटेशंस, वी आर टू फोकस्ड ओनली ऑन शेक्सपियर, और वो सारे कोटेशंस देख लेने हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, कौन सी लाइन है, कौन उसको बोल रहा है, which character speaks that quotation, in which situation that quotation is spoken, and in which drama or which work that quotation has been taken. वो करने के बाद again we are to do 100 MCQs from 4:30 to 6 p.m. and then in the next session from 7 to 8:30 again give mock test. And here, friend, in your revision, your focus should be on formula revision, because we have introduced a new topic here, data interpretation. So आप जब data interpretation करोगे तो इसमें कुछ formulas भी आपको याद रखने पड़ेगी और उसकी practice भी करनी पड़ेगी related sums की। तो वो formula revision और related जो questions होते हैं उसको solve करना, that would be done in our last session of day 5. Then comes day 6. In that our focus would be on Shakespeare's comedies and histories. देखो अगले दिन हमने उसकी ट्रेजेडीज के ऊपर ही फोकस किया था, अब हमारा फोकस किस पे ऊपर है, उसकी कॉमेडीज क्या क्या है और हिस्टोरिकल प्लेस कौन से है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसकी थीम क्या है, ये सारी चीजें हमें उसको देख लेना है। इन सेशन 2 और फोकस वुड बी ऑन कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। हमको पता है कि लिरिकल बैलाड से ये रोमांटिक एज शुरू हुई, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिटिसिज्म का है, तो वहां वो जो है उसमें जो थ्योरी की बात कर रहे हैं वो हमें देखना है, और दूसरे उसके जो क्रिटिसिज्म है पोएट्री के बारे में, जैसे वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, तो वो कहाँ कहा गया है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में उसने बोला है, और वो कह रहा है कि पोएट्री की जो लैंग्वेज है वो रस्टिक होनी चाहिए, तो वो ऐसा क्यों कह रहा है, और उसमें और कोलरिज में डिफरेंस क्या है। सो ये सारी चीजें हमें ये पढ़नी है यहाँ। Then in the next session in paper 1 our focus would be on ICT, information and communication technology. Then in next session from 2 to 4 p.m. as in the morning we have studied Shakespeare's comedies and histories, here we shall focus on Shakespeare's characters only. Then in the next session do the practice of PYQs, and here we are not to give just mock test, friends,
लेकिन हमें जो आगे डे 1 से लेके डे 6 तक जो हम पहुंचे हैं, तो उतना जो कंटेंट है उसकी एक सेक्शनल टेस्ट जो है वो हमें देनी. सो वी हैव टू perform a sectional test, and after that, from 9 to 10, go through your notes, your flashcards, and remember the things you have prepared. And इस वीक का जो आखिरी डे है उसमें हम मेटाफिजिकल पॉइंट्स के बारे में सुबह से शुरू करेंगे. Our first session will be on metaphysical poets. Then, in second session, our focus would be on Matthew Arnold. In the third session, we shall focus on higher education system. Then, from 2 to 4, in that session, we shall do the weekly revision, that what we have done in literature, in theory and criticism, and in paper 1. So, weekly revision in these 2 hours. And from 4:30 to 6, give full test. And from 7 to 8:30, do the error analysis, that where you have done mistakes, where have you not performed well, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे. And from 9 to 10, you are to do the introspection, that कौन से areas जो है उसमें मैं weak हूँ, उसको मैं कैसे और बेहतर बना सकूं, और वो बेहतर हो सकते तो ही हमें प्रयास करने, अगर नहीं होते तो कुछ एरियाज हमें छोड़ देने. सो फ्रेंड्स, दिस इज द प्लानिंग फॉर वीक 1. इफ यू प्रिपेयर इन दिस मैनर, most of the portion will be covered, and that too in simultaneous manner. Friends, let us go ahead. अब हम वीक 2 के बारे में देखते. In that, our focus would be on restoration to Romantic age. Along with that, we shall include theory portion. So, this is the table before you, friends. Our day 8 will begin from session 1. Now, friends, you know, session 1 is from 6:15 to 8:15. Session 2 from 9 to 11. Session 3 from 11:20 to 1. From session 4. So I will just speak session. In session 1, we will focus on restoration drama. In session 2, study about T.S. Eliot, but not as a poet, but here we shall focus on him as a critique. In the third session, go through the people and environment topic related to paper 1. In session 4, do the practice of chronology of works and writers. In session 5, do 100 MCQs. Session 6, give mock test. And in the last session, do the revision of your errors and try to improve them. Then next day, day 9, we shall start with Augustine age. Then I.A. Richards in the next session. Then in paper 1, we shall do mathematical reasoning. फिर दोपहर के वक्त में 2 से 4 बजे हम लिटरेरी मूवमेंट्स जो है अलग अलग, तो वो मूवमेंट्स के बारे में, जैसे कि रोमांटिक मूवमेंट है तो वो क्या है, ऐसी अलग अलग जो मूवमेंट्स है वो देखेंगे. फिर पीवाईक्यूज करेंगे उसके बाद के सेशन में. फिर सेक्शनल टेस्ट देंगे, और जो भी नोट्स आपने बनाई हो उसको रिवीजन करना है लास्ट सेशन. 10वें दिन आपको क्या करना है, स्विफ्ट और पॉप को पढ़ना है. उसके बाद के सेशन में our focus should be on new criticism. Then in paper 1, do the practice of reading comprehension. Then at noon, go through the important essays of English literature. And in the next session, give 100 MCQs, go through at least 100 MCQs, and then
in the next session give mock test, and along with that do formula practice of paper 1, or do the practice of reading comprehension on your own. Day 11, pre-romantics. We'll start with pre-romantics, then structuralism, then information communication, और दोपहर का जो सेशन है उसमें लिटरेरी टर्म्स, फिर पीवाईक्यूज करेंगे, मॉक एनालिसिस करेंगे, और लास्ट सेशन में हम फिर से रिवीजन करेंगे. डे 12 हमारा बिगिन होगा रोमांटिक पोएट्री से. उसके बाद हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म देखेंगे. यहाँ है वो गवर्नेंस वाला पार्ट जो है पेपर 1 में, वो देखेंगे. और गवर्नेंस को हमें एजुकेशन के साथ जोड़ के देखना है. जैसे कि मान लो कोई पॉलिसी बनी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो वो कैसे अफेक्ट करती है हायर एजुकेशन को, वो हमारा फोकस रहना चाहिए. उसके बाद पोएट्री जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है कॉम्प्रिहेंशन में. वहां प्रोज थे तो यहाँ पोएट्री. देन डू द प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, गिव फुल मॉक टेस्ट एंड रिवाइज योर मिस्टेक. 13th डे जो है उसमें आप रोमांटिक नोवेलिस्ट के ऊपर जाओगे. थ्योरी में आप फेमिनिज्म लोगे, और यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वहां एजुकेशन का प्रोविजन क्या है उसके बारे में हम देख लेंगे. यहाँ जो है दोपहर का सेशन है, खास करके मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दैट राइटर्स, और उसको मिलेंगे अवार्ड्स के बारे में. तो हमें जो बुकर प्राइज है, नोबेल प्राइज है, साहित्य अकेडमी अवार्ड से, वो सारा देख लेना. फिर पीवाईक्यूज करना है, उसकी सेक्शनल टेस्ट देनी है, और उसका क्विक रिवीजन करना है. और इस वीक का जो आखिरी डे है 14th डे, उसमें हम रोमांटिक प्रोज देखेंगे, मार्क्सिज्म को टच करेंगे, करंट अफेयर्स जो है एजुकेशन के बारे में जो नए बदलाव आए हो वो देखने का प्रयास करेंगे. फिर वीकली रिवीजन करेंगे. और यहाँ जो है वो एमसीक्यू बढ़ाए हमने, 150 कर दिए. सो वी आर टू प्रैक्टिस 150 एमसीक्यू इन द लास्ट डे एंड गिव फुल मॉक टेस्ट नाउ एंड फोकस ऑन आवर वीक टॉपिक्स. नाउ फ्रेंड्स, week 3. In week 3, from day 15 to 21, our focus would be on Victorian age, modernism, and Indian writing. So here, on 15th day, our session will begin with Victorian poetry, then psychoanalysis, and then in paper 1, teaching models and methods. And at noon session, we will focus on Victorian authors. Then do the practice of MCQs, mock test, and revision. Day 16, go through the Victorian novels. In theory, go to post-colonialism, and in paper 1, go to the research ethics. And at noon, go through the important quotations. और उसके बाद PYQ, sectional test, and flashcard. Day 17, Dickens and Hardy की नोवेल के बारे में हमें पढ़ना है. After that, go to the cultural studies and go through the whole aspects of it. हमने भी एक कल्चरल स्टडीज के ऊपर वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो. तो आपको पूरा आइडिया वो कल्चरल स्टडीज का आ सकता है. फिर इन पेपर 1 कम्युनिकेशंस के जो मॉडल्स है उसके बारे में देख लेना. और दोपहर को नोवेल्स जो है उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, यानी कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू नोवेल्स. देन डू द प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, एंड rectify your errors through your notes. Day 18 आपका फोकस होना चाहिए मॉडर्न पोएट्री, देन इन थियोरी इको क्रिटिसिज्म, और पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग करना है. और दोपहर को लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है. फिर पीवाईक्यू, मॉक एनालिसिस एंड रिवीजन करना है. डे 19 है वो मॉडर्न ड्रामा के ऊपर जाना है. थियोरी में रीडर रिस्पॉन्स थियोरी जो है वो देखना है, और डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो देखना है, और इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट कौन कौन से वो दोपहर को देखना है. फिर एमसीक्यू, सेक्शनल टेस्ट एंड रिवीजन. डे 20 जो है वो इंडियन राइटिंग इंग्लिश में जाना है. थियोरी में डायस्पोरा स्टडीज क्या है वो देख लेना.
और पेपर 1 में हमें आईसीटी प्लस हायर एजुकेशन जो है वो दोनों के बारे में देखना है. And at noon we have to focus on Indian authors and their work. And in the following sessions, you are to do PYQ practice, give full mock test and flashcards. And the last day of this week, we have to focus on partition literature. And in that partition literature, in the next session, our focus would be on subaltern studies. गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, तो हमने एक वीडियो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के ऊपर भी बना के रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो. देन गिव वीकली पेपर 1 रिवीजन. यहाँ हमें तुम्हें पूरा एक पेपर जो है पेपर 1 उसका एक रिवीजन करना है, होल 1 पेपर. एंड एट नून टाइम do the weekly revision of literature or theory part, and at least go through 150 MCQs, give full test, and try to modify your weak areas and try to do best performance in them also. Then friends comes week 4. ये जो week 4 है, day 22 to 26. Here we shall focus on American literature and world literature plus language. So on day 22, our session will start with American Renaissance. उसके साथ साथ हम नेक्स्ट सेशन में लिंग्विस्टिक्स के बेसिक्स की बात करेंगे, वो समझेंगे. And in paper 1, in the next session, our focus would be on teaching aptitude revision, because you have already gone through teaching aptitude. So here you have to do revision of them. At noon, focus on American writers, and then go through MCQs, mock test and revision. Day 23, modern American literature से हम शुरू करेंगे. थ्योरी वाले पार्ट में हम जो है वो फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, उसकी नोट्स बनाएंगे. फिर इन पेपर 1 focus on research aptitude and do the revision of that. And at noon, go through the different terms related to language and linguistics. And after that, do PYQ practice, sectional test and formula revision. Day 24, African and Commonwealth literature. वो देखना है. उसके साथ साथ हमें लैंग्वेज वाला जो पार्ट है उसमें लिंग्विस्टिक्स में खास करके सिंटेक्स एंड सेमांटिक्स जो है वो देखना है. और पेपर 1 के लिए लॉजिकल रीजनिंग जो है उसका रिवीजन करना है, और दोपहर को थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है जो आगे हमने पढ़ी. एमसीक्यूज करने हैं, फुल मॉक टेस्ट देना है एंड रिवीजन करना है. डे 25 गो टू यूरोपियन लिटरेचर, और नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस अबाउट pragmatics and stylistic. In paper 1, do the revision of DI and ICT, data interpretation and ICT. And at noon, study world literature. And then do the practice of PYQs, give mock test and do the error analysis. And last day of this week, 26, literary terms का हमें फुल रिवीजन से स्टार्ट करना है. अर्ली सुबह 2 घंटे हमें सिर्फ और सिर्फ we have to go through the literary terms in the morning. Then in the next session, go through the narratology. And in paper 1, in the next session, current affairs plus higher education. And then give mega revision. Do 200 MCQs. Now देखो अब धीरे धीरे जो है वो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती गई है. तो अब हम जो पहले 50 क्वेश्चंस कर सकते थे, अब वो उसको हमने धीरे धीरे बढ़ा के हम we have gone to the level of 200, and we should be able to do those in 1.5 or 2 hours. Then give the full mock test and do the analysis of your weak areas. So this is the planning of till week 4. Now still we have, so from day 27 to 30, now we give focus on
final revision phase. In it, we shall do the complete revision plus mock test only. So on 27, in morning session, go through the revision of paper 1. At noon, go through the revision of British literature. Evening, give the full mock test. And at night session, do the error analysis. Day 28, do the revision of literary theory plus Indian and American literature at afternoon session. Give mock test at evening, full mock test, and do revision at night. 29, do the revision of linguistics plus literary terms. In the next section, do the PYQ's complete revision. And in the evening, give grand mock test of more than 100 questions. And at night, remember the important facts about literature, about literary theory, about writers. And our last day, on 30th day, we are to do the revision of formulas and whatever the notes you have prepared, go through them. कोई नया टॉपिक हमें स्टार्ट नहीं करना है, हमने जो भी बनाया है उसको हमें देखना है. आफ्टरनून के सेशन में आपको मेमोरी रिकॉल करना है कि पूरा ये जो 30 डेज में मैंने क्या किया, रिलैक्स वे में स्टडी करना. अब हमें ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेने की जरूरत नहीं. सो बी रिलैक्स्ड and just remember whatever you have passed through. Then give the final mock and go to sleep at night. Then friends, डेली जो माइक्रो टारगेट्स हमारे कैसे होने चाहिए, ये तो हमने 1 to 30 डेज के कर दी कि उसमें भी हमें क्या क्या करना है और कौन से सेशन में क्या करना है. और हमने साइमल्टेनियसली पेपर 1 भी रखा, पेपर 2 में भी लिटरेचर भी रखा और लिटरेरी थियोरी और क्रिटिसिज्म वाला पार्ट भी रखा. लेकिन डेली जो माइक्रो टारगेट्स होने चाहिए वो इतने तो होने चाहिए हमारे कि हमें मुझे 150 to 250 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू है वो करने हैं. मिनिमम 2 इयर्स के जो पीवाईक्यूज है एटलीस्ट करने. लिटरेरी टर्म्स डेली 20 लिटरेरी टर्म्स करने. राइटर्स और वर्क्स है डेली 25 वर्ष हमें देखने हैं, उसकी क्रोनोलॉजी वगैरह देखनी. और क्रोनोलॉजी में भी एटलीस्ट 15 डेट्स जो है हमें याद रखने का या समझने का प्रयास करना. देन 5 कोटेशंस पर डे, एटलीस्ट 2 थियोरी कंसेप्ट पर डे, एंड रिवाइज डेली द फॉर्मूलाज ऑफ पेपर 1. ये हमारा डेली माइक्रो टारगेट ये भी साथ साथ में होना. देन जो फुल मॉक टेस्ट की बात हम करते हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए. So in full mock test, week 1, you are to give just 2 mock tests. In week 2, 3 mock tests. In week 3, 4. And in week 4, we are to give 5 mock tests. और जो आखिरी 4 days है, in the final 4 days, we are to give full mock test daily. Means 4 last mock tests in 4 days. In last 4 days. देन लास्ट 7 डेज जो है उसके लिए हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए. व्हाट शुड बी द स्पेशल स्ट्रेटेजी इन द लास्ट 7 डेज. सो फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन रिवीजन ऑफ नोट्स एंड एटलीस्ट 3 आवर्स आपको उसमें देने हैं. देन फॉर पीवाईक्यूज गिव 2 आवर्स, फॉर मॉक टेस्ट गिव 3 आवर्स, फॉर एरर एनालिसिस गिव 2 आवर्स, and for flashcard or chronology at least give 1 hour. So this could be the strategy of last 7 days, means last week. And अब मान लो कि after 30 days means after a month there is your exam. So what should be our strategy on the day of exam? जब हम एग्जाम देने जाएंगे what should be our strategy? So morning session में पहला हमें रिवाइज कर लेना है शॉर्ट नोट्स जो भी हमने बनाई है. we have to just pass through them और उसको
डिटेल में नहीं पढ़ने बैठना है, वी आर जस्ट टू ग्लांस एट देम। जब एग्जाम स्टार्ट हो उसके पहले कोई नया टॉपिक्स नहीं करना है, अदरवाइज इट विल कंफ्यूज यू मोर। सो डोंट गो टू द न्यू टॉपिक्स during paper 1. Now actually you are giving paper, so during paper 1 our strategy should be first solve easy question. If you are going from question 1 and 1 you did well, then you go to question number 2. अगर वो क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है तो उसको थोड़ा साइड में रख के तीसरे पे चले जाओ। सो पहले इजी क्वेश्चन करना है, उससे क्या होगा, साइकोलॉजिकली हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। मान लो 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ऐसे निकले जो आपको आ गए, सो यू आर श्योर नाउ दैट एटलीस्ट 50 मार्क्स आई विल गेट इन पेपर 1। नाउ यू हैव only 25 questions left for paper 1. In that also you tried to invest your time in them. 5 questions ऐसे निकले जो आप कर सके, तो अब जो 20 questions है उसमें से 10 questions तो ऐसे रहेंगे जिसमें आपको assume करना पड़ेगा। तो assumption की भी एक स्ट्रेटेजी होती है, किस प्रकार से assume करें। So in this manner our target should be 30 to 35 question at least confirm for paper 1. एंड ड्यूरिंग पेपर 2 में क्या करेंगे, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया से वो पेपर हम पढ़ते जाएंगे। कल्चरल स्टडीज का क्वेश्चन पूछा है तो यू कैन डू इट इजीली, तो ऐसे तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरिया से उसको पहले कर लो, बाद में जो डिफिकल्ट लगे वो, और उसके बाद जो टेक्निक अपनानी है हमें, दैट यू आर टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस एंड देन यू आर टू रीच टू द राइट आंसर। और लास्ट 10 minutes of the paper, review the whole marked answers because it's CBT exam. So go through the sections and check whether you have marked correctly or not. Do the revision or review of the paper. That should be our exam day strategy. Now final motivational reminder friends. तो यहाँ एक बहुत अच्छा सा पिक्चर आप देख सकते हो, यू कैन सी इफ इट्स ऑप्शनल इट वॉन्ट हैपन। सो फ्रेंड्स, अगर आप जो चीजों को लेटर करके उसको ऑप्शनल बनाते रहेंगे तो वो कभी नहीं होने वाला। लेकिन इफ यू हैव मेड इट ए रूल, तो वहां देखो उस दौर में से सामने दूर दूर सक्सेस, आपकी मंजिल जो है वो है, तो आप वहां पहुंच सकोगे। सो फ्रेंड्स, फॉलो दिस टाइम टेबल स्ट्रिक्टली एंड स्टॉप अदर थिंग्स ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। दूसरा पिक्चर हम देखें तो एक दिन आपने फॉलो किया तो कुछ नहीं होगा, उसको आपको डेली हैबिट में बिठाना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के बिना रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए मैंने दूसरा पिक्चर ऐसा रखा, कंसिस्टेंसी इज सेल्फ ट्रस्ट इन मोशन। सो आई कैन काउंट ऑन माई सेल्फ। हमें दूसरे किसी के ऊपर ज्यादा आधारित नहीं रहना, वी आर टू फोकस ऑन आवर सेल्फ, वी आर टू हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेंगे, तो ही हम मंजिल तक पहुंच सकेंगे। हमारा जो सक्सेस का कप है वो हमारे सामने ही होगा। और लेक्चर अंत में अगर सक्सेस फॉर्मूला की हम बात करें तो आपको रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज प्लस मॉक टेस्ट and plus consistency. If these 4 things are there added into your practice, then your goal of achieving JRF will be very near to you. So friends,
In your preparation, you might have to pass through many such situations. You might have many doubts, fears, failures, comfort zone. Many things would be there. But remember, you are to do the resistance of all these things because your goal is to reach जो भी आपने टारगेट बनाया है वहां जाना है. So friends, I hope कि ये पूरा जो प्लानिंग हमने बनाया है वो आपको बहुत काम आए. और ये जो 1 मंथ के लिए मैंने बनाया है वो जब आपके पास मान लो किसी का ऐसा है कि टारगेट है दिसंबर में एग्जाम देने का, तो उन लोगों के पास 6 मंथ का वक्त है. तो इसी टाइम टेबल को आप स्ट्रेच आउट कर लोगे तो ज्यादा आवर्स दे सकोगे और यू कैन प्रिपेयर इट मोर इन मोर बेटर वे एंड it will be easy for you to reach to your target. So thank you very much. We are ending this lecture here. I hope this whole planning of daily planning as well as weekly planning will be very helpful to you. अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आई विश यू all the best for your upcoming exam. In our next video, friends, ये जो मैंने कुछ टॉपिक्स बताए ना उसके डिटेल के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि मान लो हमने ऐसा बोला कि शेक्सपियर के कॉमेडीज या उसके ड्रामा करना है तो उसमें भी क्या क्या करना है उसका एक पूरा डिटेल वीडियो आगे मैं बनाऊंगा एंड आई विल अपलोड इट. So that will be also very beneficial to you. And after that, I have also prepared stuff for paper 1 में भी detailed कैसे preparation करनी है. So after that, I will put the video of paper 1-2 of detailed analysis. So friends, meet you in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you very much.